इस्तेमाल हो जाती है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंक्वायरी, इंक्वायरी की क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। साइंटिफिक इंक्वायरी डिफर्स ग्रेटली फ्रॉम जर्नल इंक्वायरी, जो साइंसी इंक्वायरी है वो आम इंक्वायरी से मुख्तलिफ है। डैट वी समटाइम्स कंडक्ट टू फाइंड इंफॉर्मेशन, जो कि हम बाज़ात कंडक्ट करते हैं मालूमात मालूम करने के लिए। इट डिफ़र्स विद रिस्पेक्ट टू फिनोमिना साइंटिस्ट्स इन्वेस्टिगेट एंड आल्सो दे the method they use to collect the required information and how they draw conclusions, the logical and critical approach they use. There is a common understanding among the scientists about what constitutes an investigation that is scientifically valid. We often read about steps of scientific inquiry or scientific method. However, there is a fixed set of steps of conducting scientific investigation. There are, however, certain characteristics of scientific investigation that make it distinctive mode of inquiry. It is important to note that although scientific inquiry is a special form of investigation, yet it can be applied in many matters in our daily life. A science educator at the University of the Minnesota, USA, has identified 5 characteristics of the inquiry process as follows. Number 1, observation. Observation is the standard place for inquiry. Is the starting place for inquiry. जो observation है, मुशाहदा है, वो inquiry का starting place है, inquiry शुरू करने की जगह है. However, to make relevant, complete and accurate observation, it is essential to ask the right type of question. ताहम टू मेक रेलिवेंट इंक्वायरी, मुतलका इंक्वायरी को कंप्लीट करने के लिए, एंड एक्यूरेट ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो ठीक करने के लिए, इट इज़ असेंशियल, ये ज़रूरी है, टू आस्क द राइट टाइप ऑफ क्वेश्चन, के क्वेश्चन जो हैं वो ठीक किस्म का पूछा जाए. व्हाट, व्हाई एंड हाउ आर द क्वेश्चंस दैट गाइड द ऑब्जर्वर इन द प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन. क्वेश्चन जो हैं वो क्या, क्यों और कैसे जो हैं इस सूरत में होते हैं. डेट गाइड द ऑब्जर्वर, जो कि ऑब्जर्वर को गाइड करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन, प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन के हवाले से. नंबर 2, मेजरमेंट. प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी इज़ द हॉलमार्क ऑफ ऑल साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन. मेजरमेंट इज़ ए प्रोसेस स्किल. मेजरमेंट एक जो है प्रोसेस स्किल है विच हेल्प्स टू डिस्क्राइब द ऑब्जेक्ट्स एंड फिनोमिना इन क्वांटिटेटिव टर्म्स with precision and accuracy. Hence, it is a basic and an essential process of science. ये साइंस का बुनियादी और ज़रूरी तरीक़ाकार है मेजरमेंट. प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, दुरुस्तगी जो है वो एक हॉलमार्क है साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का, जो भी हमारी मेजरमेंट है. मेजरमेंट इज़ ए प्रोसेस स्किल विच हेल्प्स टू डिस्क्राइब द ऑब्जेक्ट्स एंड फिनोमिना. ये मेजरमेंट जो है वो और किसी भी ऑब्जेक्ट्स को या फिनोमिना जो है उसको क्वांटिटेटिव टर्म्स की सूरत में डिस्क्राइब करती है. नंबर 3, एक्सपेरिमेंटेशन. लेबॉर्ट्री एंड एक्सपेरिमेंट्स आर कंसिडर्ड करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द साइंटिफिक एक्टिविटी. लेबॉर्ट्री और एक्सपेरिमेंट्स जो हैं, तजर्बात जो हैं, और कंसीडर्ड, उनको तस्वुर किया जाता है करेक्टरिस्टिक फ़ीचर ऑफ साइंटिफिक एक्टिविटी. साइंटिस्ट कंडक्ट एक्सपेरिमेंट्स. साइंटिस्ट जो हैं वो तजर्बात करते हैं टू कलेक्ट डेटा हासिल करने के लिए, एंड टू टेस्ट दी हाइपोथेसिस और हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए. एक्सपेरिमेंट्स इन्वॉल्व ए नंबर ऑफ साइंस प्रोसेस स्किल्स. एक्सपेरिमेंट्स तजर्बात जो होते हैं उसमें बहुत सारे साइंस के प्रोसेस स्किल्स आ जाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, ऑब्जर्वेशन, मेजरमेंट, क्लासिफिकेशन, इन्फरेंस, कंट्रोलिंग वेरिएबल्स, मैनिपुलेटिंग साइंस इक्विपमेंट. वी कैन क्लासीफाई इट एज इंटीग्रेटेड
skill since it involves many skills. इनको हम integrated skills भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे skills involve होते हैं. Number 4, communication. It is essential that scientists communicate the results of his inquiry to the साइंटिफिक कम्युनिटी. ये ज़रूरी है कि साइंसदान जो हैं अपने रिज़ल्ट्स इंक्वायरी के हवाले से जितने भी वो कम्युनिकेट करें साइंटिफिक कम्युनिटी को एंड आल्सो द पब्लिक और आवाम को भी. हैंस इट इज़ असेंशियल पार्ट ऑफ द इंक्वायरी प्रोसेस क्योंकि ये इंक्वायरी के तरीक़ाकार का बहुत अहम जुज़ है. द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑनेस्ट एंड truthful reporting of results of observation and measurement are essential in all scientific investigations. Mental process. Performing experiments and collecting data is one component of scientific inquiry. See, scientific inquiry का एक component है critically analyzing and evaluating data, finding pattern in data, proposing explanation on basis of data and formulating theories are essential mental process without which scientists can not generate new knowledge. Experts have described several thinking processes that are integral part of any scientific inquiry. Some of these includes inductive reasoning. इसमें inductive reasoning include होती है a general conclusion is arrived at by specific examples. Deducting reasoning that specific conclusions is arrived at from a general principle. An example of deductive reasoning is as follows: gravity makes things fall. ग्रेविटी की वजह से तमाम चीज़ें नीचे गिरती हैं. दिस The apple that hit my head was due to gravity. In this example, the conclusion about a specific instance has been derived from the law of gravity. Deduction is used by scientists who take a general scientific law and apply it to a certain case as they assume that the law is true. Deductive reasoning begins from a general hypothesis or known fact and creates a specific conclusion from what generalization, whereas inductive reasoning involves creating broad generalization from specific observations. The scientists also use imagination and institution in formulating scientific knowledge. In descriptions of scientific method, the same steps may be in different sequence and including many other steps are given as are included in scientific inquiry. Hence, we can conclude that in inquiry scientific method of research is